All right, so good evening everyone. यूएस फेड की पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है. टेक्निकल इश्यूज थोड़ा ज़्यादा था, तो थोड़ा टाइम लग गया स्टार्ट करने में, लेकिन नाउ विल स्टार्ट विद द पॉलिसी. डिसीजन जो है वो आ चुका है. डिसीजन है इंटरेस्ट रेट इस बार मेंटेन किया है एज पर एक्सपेक्टेशन. इंटरेस्ट रेट मेंटेन हुआ है. इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया है. सो पहले चेक कर लेते हैं वो. सो इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर. Okay, economic calendar investing.com. इकोनॉमिक कैलेंडर क्या सजेस्ट कर रहा है? फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन 4.5% एक्सपेक्टेशन था. प्रीवियस भी 4.5% था और एक्चुअल भी 4.5%, यानी कि अनचेंज, कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड और मोस्टली इंटरेस्ट रेट का डिसीजन उस हिसाब से ही आता है. सो व्हाट मैटर्स इज प्रेस कॉन्फ्रेंस. के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आ रहा है. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस कैसे करते हैं हम उसका टोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. सो अब लेट्स आइडेंटिफाई टोन. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. Despite heightened uncertainty, the economy is still in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. The risks of higher unemployment and higher inflation appear to have risen, and we believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. एक बार इस सेंटेंस को monetary policy after एक बार इस सेंटेंस को रिविजिट करते हैं. Decided to leave our policy interest in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. The risks of higher unemployment and higher inflation appear to have risen, and we believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned. बता रहा है कि इंटरेस्ट हायर इन्फ्लेशन और हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो रिस्क था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा कम हुआ है. ठीक है, तो ये एक डॉविश स्टेटमेंट है. To respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Pardon me. Following growth of 2.5% last year, GDP was reported to have edged down in the first quarter, reflecting swings in net exports that were likely driven by businesses bringing in imports ahead of potential tariffs. This unusual swing complicated GDP measurement last quarter. Private domestic final purchases, or PDFP, which excludes net exports, inventory investment, and government investment in equipment and intangibles, rebounded from weakness in the fourth quarter. Surveys of households and businesses, however, report a sharp decline in sentiment and elevated uncertainty about the economic outlook,
largely reflecting trade policy concerns. It remains to be seen how these developments might affect future spending and investment. In the labor market, conditions have remained solid. Payroll job gains averaged 155,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.2% remains low and has stayed in a narrow range for the past year. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, a wide set of indicators suggest that conditions in the labor market are broadly in balance and consistent with maximum employment. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. लेबर मार्केट इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो लेबर मार्केट की वजह से भी ड्राइव नहीं हो रहा है. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Total PCE prices rose 2.3% over the 12 months ending in March. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.6%. Near-term measures of inflation expectations have moved up, as reflected in both market and survey-based. नियर टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन हैज मूव्ड अप, मतलब कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशन है नियर टर्म के, मतलब इमीडिएट टर्म के, वो थोड़े ऊपर की तरफ का है. इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जा सकता है यहाँ से, Measures. जो कि हॉकी स्टेटमेंट होता है. The respondents, including consumers, businesses, and professional forecasters, point to tariffs as the driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5% and to continue reducing the size of the balance sheet. The new administration is in the process of implementing substantial policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. The tariff increases announced so far have been significantly larger than anticipated. All of these policies are still evolving, however, and their effects on the economy remain highly uncertain. As economic conditions evolve, we'll continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the outlook, and the balance of risks. If the large increases in tariffs that have been announced are sustained, they're likely to generate a rise in inflation, a slowdown in economic growth, and an increase in unemployment. The effect जो टैरिफ है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और ग्रोथ कम हो सकता है. अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो पॉजिटिव होता है करेंसी के लिए, जीडीपी कम होता है तो वो नेगेटिव होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो वो भी नेगेटिव होता है. 3 में से 2 फैक्टर नेगेटिव होते हैं, 1 फैक्टर पॉजिटिव होता है. बट अगर जीडीपी कम होता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इट इज ऑब्वियसली नेगेटिव फॉर द करेंसी, राइट? So inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. It is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent. Avoiding that outcome will depend on the size of the tariff effects, on how long it takes for them to pass through fully into prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to prevent a one-time increase in the price level from becoming an ongoing inflation problem. ठीक है, लॉन्गर टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो अभी भी ठीक है. देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है. ये जो इफेक्ट है वो नियर टर्म के लिए है मेनली. We have to meet that obligation. We'll balance our maximum employment and price stability mandates, keeping in mind that without price stability, we cannot achieve the long periods of strong labor market conditions that benefit all Americans. We may find ourselves in the challenging scenario in which our dual mandate goals are in tension. If that were to occur, we would consider how far the economy is from each goal and the potentially different time horizons over which those respective gaps would be anticipated to close. For the time being, we're well positioned to wait for greater clarity before considering any adjustments to our policy stance. फॉर टाइम बीइंग वेरी बेटर प्रिपेयर्ड. अभी वो प्रिपेयर्ड है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहते हैं कोई भी डायरेक्शन में आगे मूव करने से पहले.
At this meeting, the committee अब नॉर्मली टाइम पीरियड की बात होती है, टाइम पीरियड नीचे का ही है, सॉरी मूवमेंट जो डायरेक्शन जो है वो नीचे का ही है। ये तो पक्की बात है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने ही नहीं वाला है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो या तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा या तो यहाँ पर मेंटेन होगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकना चाहते हैं। आगे मतलब कि किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि डोविश डायरेक्शन में जाने से पहले थोड़ा रुकना चाहते हैं। तो दिस इज अ हॉकिश स्टेटमेंट। continue this discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. We focused on inflation dynamics and the implications for our monetary policy strategy. Our review includes outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference next week. Throughout this process, we're open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. फेड के 2 गोल हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइसेस। Remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our. Steve, thank you, Mr. Chair, for taking my question. अब क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हुआ है। What has happened since the last meeting? There have been tariffs put on, tariffs taken off, and you know there's a bill advancing in Congress. And I just wonder if I could press you on the last part of your statement. Are you any closer now to deciding which side of the mandate is going to need urgent care first? Well, so as we noted in our statement, post-meeting statement, we've judged that the risks to higher employment and higher inflation have both risen, and this, by the way, of course, is compared to March. So that's what we can say. I don't think we've judged that the risks to higher employment and higher inflation have both risen, and this, by the way, of course, is compared to March. So that's what we can say. I don't think we can say, which way this will shake out. I think there's a great deal of uncertainty about, for example, where tariff policies are going to settle out, and also when they do settle out, what will be the implications for the economy, for growth, and for employment. I think it's too early to know that. So, ultimately, we think our policy rate is in a good place to stay as we await further clarity on tariffs and ultimately their implications for the economy. Hearing you describe what you're looking for in terms of being able to make a decision, it sounded like that's a long-term process before you sound like you're going to be comfortable, or the committee would be comfortable to act on what the data is telling you. I don't think we know. I think, look where we are today. We have an economy that, if you look through, the sort of distortions in Q1 GDP, you still got an economy that looks like it's growing at a solid pace. The labor market appears to be solid. Inflation is running just a bit above 2%. So it's an economy that's been resilient and is in good shape. And our policy is sort of modestly or moderately restrictive. It's 100 basis points less restrictive than it was last fall. And so we think that leaves us in a good place to wait and see. We don't think we need to be in a hurry. We think we can be patient. We're going to be watching the data. The data may move quickly or slowly, but we do think we're in a good position where we are to let things evolve and become clearer in terms of what should be the monetary policy response. बोल रहे हैं कि जो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे इंटरेस्ट रेट कट के डायरेक्शन में, वहां पर रुकने के लिए कंफर्टेबल है, बराबर, यानी कि यहाँ से नीचे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये हॉकी स्टेटमेंट है, ये डॉविश स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि नीचे जाना इट्स डॉविश, यहाँ से नीचे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस लेवल पे हम हैं यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं। अभी जो सिचुएशंस अराइज हो रही है, ट्रम्प के टैरिफ आ रहे हैं, वो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन देखने के लिए हम जिस लेवल पे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी अभी अच्छा है, तो उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये इन अ वे इट्स अ लेवल जहां पर हम कंफर्टेबल हैं, एंड यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। There are some who argue that the current situation has notable differences. Energy costs are down,
Housing imbalances look nothing like they did 4 years ago. Labor demand appears to be gradually cooling with wage growth running below 4%. What do you see right now that could nourish higher inflation beyond a rise in goods prices this year? I think the underlying inflation picture is good. It's what you see, which is inflation now running a bit above 2%. And we've had basically decent readings in housing services and non-housing services, which is a big part of it. So that part, I think, is moving along well. But there's just so much that we don't know. I think, and we're in a good position to wait and see is the thing. We don't have to be in a hurry. The economy has been resilient. It's doing fairly well. Our policy is well positioned. The costs of waiting to see further are fairly low, we think. So that's what we're doing. And, you know, we'll see the administration is entering into negotiations with many countries over tariffs. We'll know more with each week and month that goes by about where tariffs are going to land, and we'll know what the effects will be when we start to see those things. So we think we'll be learning. I can't tell you how long it will take, but for now it does seem like it's a fairly clear decision for us to wait and see and watch. So when you say that you don't need to be in a hurry, does that mean that could the outlook change in such a way that a change in your stance could be warranted as soon as your next meeting? You know, as I said, we are comfortable with our policy stance. We think we're in the right place to wait and see how things evolve. We don't feel like we need to be in a hurry. We feel like it's appropriate to be patient. And you know, when things develop, of course, we have a record of we can move quickly when that's appropriate. But we think right now the appropriate thing to do is to wait and see how things evolve. There's so much uncertainty. We talk to businesses, the market participants, or forecasters. Everyone is just waiting to see how developments play out, and then we'll be able to make a better assessment of what the appropriate path for monetary policy is. So we're not in that place, and you know, as that develops, I can't really give you a time frame on that. So it was a good question. ये अच्छा सवाल था कि आपको क्या लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका स्टैंस चेंज करना चाहिए। स्टैंस चेंज करने की बात क्या होगी? देखो, स्टैंस क्लियर हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से आगे नीचे जाना चाहिए, लेकिन स्टैंस चेंज कर देने का मतलब है कि क्या यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो ये दिया है कि हम जहां पर है उस लेवल पर कंफर्टेबल है। ऊपर जाने की तरफ कोई सिग्नल, कोई इशारा करने के लिए या इवन विलिंगनेस बताने के लिए भी रेडी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर क्लियर करता है कि आगे का डायरेक्शन तो क्लियर ही है, नीचे की तरफ ही रहेगा, अभी रहेगा या बाद में रहेगा। तो जो हॉकिशनेस है वो इस स्टेटमेंट से थोड़ी कम हुई है, यानी कि थोड़ा कट जो है वो शायद डिले हो सकता है, लेकिन लास्ट में एक जो सेंटेंस उन्होंने ऐड किया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस डायरेक्शन में थोड़ा जल्दी भी जा सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है, अब भले अभी ना जाए उस डायरेक्शन में आगे तेजी से, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो उस डायरेक्शन में हम थोड़ा स्पीडी भी जा सकते हैं। तो ये विलिंगनेस जो वो दिखाता है नीचे जाने की तरफ, तो ये डोविश स्टेटमेंट मैं मानूंगा इसे। Janelle Marte with Bloomberg. So many economists have been pricing in higher odds of a recession, and several are noting that it is more difficult for the Fed to cut rates preemptively given the higher risks for higher inflation. So given the outlook, do you still see a path for a soft landing, and what does that look like? Well, let me say, I mean, so let's look back and see where we are. So to go through 2024 up to the day, we've had you know, unemployment in the low 4s for more than a year. We've had inflation coming down now in the mid to low 2s. We've had an economy growing at 2.5%. So that is the economy as we see it now. What looks likely, given the scope and scale of the tariffs, is that we will see certainly the risks to higher inflation, higher unemployment have increased. And if that's what we do see, if the tariffs are ultimately put in place at those levels, which we don't know, then we won't see further progress toward our goals. But we might see a delay in that. I think in our thinking, we would never do anything but keep achieving those goals. But we would, at least for the next, let's say, year,
we would not be making progress toward those goals. Again, if that's the way the tariffs shake out. The thing is, we don't know that. There's so much uncertainty about the scale, scope, timing, and persistence of it. अगर इन्होंने बोला कि क्या लगता है आपको कि अभी रिसेशन का रिस्क बढ़ते जा रहा है टैरिफ की वजह से, तो जो आंसर आया है वो ये है कि टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और अनसर्टेनिटी जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को ऊपर लेके जा सकती है। तो रिस्क दोनों में बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाता है तो करेंसी के लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो करेंसी के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट में एक सेंटेंस ऐड किया है कि अगर ऐसा होता है, देखो डिपेंड करता है कि टैरिफ कितने ज्यादा बड़े हैं, कितने लंबे समय तक रहते हैं, कितने वाइड स्प्रेड है, तो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर ये लंबे वक्त तक टिकता है इसका इफेक्ट, तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में यानी कि 2% के डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन 1 साल तक नीचे नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन बनता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक सॉलिड हॉकिश स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। Other tariffs. So that's that. In terms of preemption, I think you can look back at the 2019 cuts as preemptive. I wouldn't say that what we did last fall was at all preemptive. If anything, it was a little late. But 2019, we did cut 3 times, but the situation was you had a weakening economy and you had inflation at 1.6%. So that's a situation where you can move preemptively. Now we have inflation running above target. It has been above target for 4 years. It's not so far above target now, and we have an expectation, conditional on what happens, that we'll see upward pressure on inflation. If you look at where forecasters are, they're all forecasting an increase in inflation. So it makes it, and then we've also got forecasts of weakening in the economy, and some have recession forecasts. We don't publish a forecast about that. We don't publish a forecast that assesses how likely a recession is. But in any case, it's not a situation where we can be preemptive because we actually don't know what the right response to the data will be until we see more data. आई थिंक स्टेटमेंट क्लियरली हॉकिश है। उन्होंने लास्ट में ये भी ऐड किया है कि हमने 2019 में, उन्होंने एग्जांपल दिया 2019 में इंटरेस्ट रेट कट हमने किए थे प्रीएम्प्टिवली का मतलब होता है कि अंदाजा लगा के कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो एक काम करता हूँ अभी से इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट करता हूँ। ये 2019 में किया था, लेकिन तब सिचुएशन क्या थी, तब इकोनॉमी वीक हो रही थी और इन्फ्लेशन 1.6% पे था और टारगेट इन्फ्लेशन का होता है 2%, यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से टारगेट से नीचे था। तो नीचे था तो ऊपर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी की सिचुएशन थोड़ी अलग है, अभी इन्फ्लेशन 2.9, 2.8, 2.5 या 3% के रेंज में है। तो यहाँ पर अगर प्रीएम्प्टिवली कट करते हैं, यहाँ पर भी इकोनॉमी कूल ऑफ होगी ऐसा एक्सपेक्टेशन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट पहले से प्रीमेच्योर कट करते हैं या प्रीएम्प्टिवली कट करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, और वो खतरा अभी लेने का माइंडसेट कम लग रहा है। इस वजह से अभी प्रीएम्प्टिव कट करना मुश्किल है। तो इधर इट्स क्लियरली हॉकिश स्टेटमेंट। Smith with the New York Times. How much weakness does the committee need to see, though, in the labor market and the economy more broadly to lower interest rates again? Is it about a certain increase in the unemployment rate over a period of time, or perhaps a certain number of negative monthly job reports? I mean, how are you making that assessment? So first of all, we don't see that yet, right? We have 4.2% unemployment, good participation, wages behaving very well. Participation, I mentioned it at a good level. So, with the labor market, we would look at the totality of the data. We look at the level of the unemployment rate. We look at the speed with which it's changing. We would look at the whole huge array of labor market data to get a sense of whether conditions are really deteriorating or not. And at the same time, we'd be looking at the other side of the mandate. We could be in a position of having to balance those two things, which is, of course, a difficult balancing judgment that we have to make. On that point about balancing, I mean, you've mentioned that the committee would consider how far the economy is from each goal and the time it would take to kind of get back to that point. But what does that mean in practice? I mean, how much of that assessment will be rooted in a forecast versus data dependence? It would be a combination of the two. I mean, let's just say this would be a complicated and challenging judgment that we would have to make. We're not in this situation, but the situation is if the two goals are in tension. So
let's say that unemployment is moving up in an uncomfortable way, and so is inflation. Not the situation we're in, hypothetically, but we would look at how far they are from the goals, how far they're expected to be from the goals, what's the expected time to get back to their goals. We look at all those things and make a difficult judgment, and that's in our framework. It's always been in our thinking. You know, we haven't faced that question in a very long time, so again, difficult judgment to make, and not one that we face today. We may never face it, but you know, we have to keep it in our thinking now. Thank you. Edward Lawrence with Fox Business. So we had the CPI report that came out that showed month over month the first decrease in inflation in about 3 years. The jobs report, you said solid, that we saw. At the same time, we have those new tariffs that we're living under. So given this, should the Federal Reserve be cutting rates at all this year? You know, it's going to depend. I think you have to just take a step back and realize this is why we are where we are. Is, you know, we're going to need to see how this evolves. There are cases in which it would be appropriate for us to cut rates this year. There are cases in which it wouldn't, and we just don't know until we know more about how this is going to settle out and what the economic. To settle out, and what the economic implications are for employment, for inflation. I couldn't confidently say that I know what the appropriate path will be. So following on that, just, you know, so then how does President Trump calling on you personally, as well as the Federal Reserve, to make rate cuts affect your decision today, affect your job difficulty? Doesn't affect our doing our job at all. So, you know, we're always going to do the same thing, which is we're going to use our tools to foster back. That's all we're going to consider. So it really doesn't affect either our job or the way we do it. Hi, Howard Stein with Reuters, and thanks for the time. I'm wondering, I mean, given the complexity about the first quarter GDP and what lies ahead, I'm just wondering what your intuition tells you about the underlying direction of the economy right now. Many of your colleagues have said they feel growth is slowing. If so, do you have any sense of by how much, to what degree the slowdown may be? What does your gut tell you about how things are evolving out there? My gut tells me that uncertainty about the path of the economy is extremely elevated, and that the downside risks have increased. The risk is, as we pointed out in our statement, the risks of higher unemployment and higher inflation have risen, but they haven't materialized yet. They're not in the data yet. So that tells me more than my intuition, because I think it's obvious actually that the right thing for us to do is we're in a good place. Our policy's in a very good place, and the right thing. Because I think it's obvious actually that the right thing for us to do is we're not in the data yet. So that tells me more than my intuition, because I think it's obvious actually that the right thing for us to do is we're in a good place. Our policy's in a very good place, and the right thing to do is await further clarity. And there's usually things clarify and the appropriate direction becomes clear. That's what usually happens. Right now, it's very hard to say what that would be. In the meantime, the economy is doing fine. Our policy isn't, it's not highly restrictive. It's somewhat restrictive. It's 100 basis points less restrictive than it was in last summer. So we think it's in a good place, and we think the appropriate thing is for us to wait and see and get more clarity about the direction of the economy. Well, let me press you on this idea of the economy being fine right now, because reading the Beige Book very closely the last time around, there was a lot of negative stuff, negative sentiment that was in there, and I know that everybody's looking at soft. ये एक सेंटेंस था जहाँ पे उन्होंने नॉर्मली ये लोग आउट ऑफ द वे जाते नहीं हैं अपने स्टेटमेंट से और अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज से, लेकिन ये आई थिंक ये निकल गया ऐसा लग रहा है मुझे,
उन्होंने सवाल पूछा था रिपोर्टर ने कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, कि डायरेक्शन क्या रहना चाहिए। गट फीलिंग, नॉर्मली गट फीलिंग पे कोई आंसर आता नहीं है क्योंकि डेटा ड्रिवन पॉलिसीज होती है, लेकिन इसका आंसर उन्होंने दे दिया है कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और इकोनॉमी नीचे की तरफ जा सकती है, यानी कि डाउनसाइड रिस्क बढ़ रहे हैं। अगर और बाद में उन्होंने थोड़ा कवर अप भी किया अपने स्टेटमेंट को कि रिस्क जो है वो इन्फ्लेशन का भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ रहा है, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया है, लेकिन इकोनॉमी नीचे की तरफ जा सकती है, ये गट फीलिंग है, क्लियरली बोला है। तो अगर इकोनॉमी नीचे की तरफ मूव करती है, यानी कि ग्रोथ कम होता है, तो ग्रोथ कम होगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में फेड के इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे। तो ये एक डविश स्टेटमेंट है। तो काफी 2-3 हॉकिश, अच्छा प्रॉपर हॉकिश स्टेटमेंट के बाद एक डविश स्टेटमेंट आया है। Data right now. You mentioned it yourself that the sentiment's sour. But the beige book was talking about, the beginnings of layoffs in some industries, prices rising in some places, and an awful lot of investment decisions being pushed to the sideline. Doesn't that point to a slowdown? It may well, it just hasn't shown up yet. We all look at all these sentiment and read many individual comments just to get a better feel. Businesses and households very broadly are concerned and postponing economic decisions of various kinds. And yes, if that continues and nothing happens to alleviate those concerns, then you would expect that to begin to show up in economic data. It wouldn't maybe show up overnight, but it would show up over weeks and months. And that may be what happens, but it hasn't happened yet. And also there are things that can happen that will, they haven't happened, but it's possible to imagine things. But in the meantime, yes, we're watching it extremely carefully like everyone is, but don't see really much evidence of it in actual economic data yet. And by the way, consumers keep spending, credit card spending. It's still a healthy economy, albeit one that is shrouded in some very downbeat sentiment on the part of people and businesses. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. The Fed's been criticized recently by a former governor for what he calls mission creep. You take on more problems, use more tools, and then end up building tools to deal with the fallout of those tools, which then makes it a given that you will act more aggressively in the future. Is that a fair critique, and is that something you would be looking at in your framework review? Sorry, say the critique again. That the Fed has been involved in using too many new tools to deal with the critique was based around the fact that you did QE and QE and QE and went beyond the narrow confines of your mandate. So, well, there are a couple, that's not really beyond the confines of our mandate. I would say this, we did things, essentially we were on an emergency footing for a couple of years in the pandemic, and it's very fair and very welcome for people to look back over what we did and say, hey, you could have done this better and different. And one thing we hear a lot is we could have explained QE a little better. We did think we were explaining it in real time. I completely accept the thought that we could have explained it better. There's a lot of thinking that we went on too long with QE. I can tell you that the reason we did was we were concerned that we didn't want a sharp tightening in financial conditions at a time when we thought the economy was still vulnerable. And so we did hold on for a long time to QE, and we of course tapered and everything. And then we immediately went into QT, and we're down a couple of trillion. But I get we certainly, with the benefit of hindsight, could have tapered earlier or faster. That's absolutely right. But this is all very welcome. We knew doing this in real time that we weren't going to get it perfect, and those kind of after action kind of looks are essential. And we're doing the same thing in our review. So on some issues. The other part of that critique is that you've taken on topics that are outside of the mandate, such as climate change and trying to ensure that certain groups are benefited by your economic policies in terms of employment, et cetera. So, okay, on climate, you've heard me say over and over again that we will not be climate policymakers, and that our role
on climate is a very, very narrow one. And I think that's what we've done. We've done really very little on climate. You can say that little bit that we've done was too much, but I wouldn't want to give any impression that we've taken climate into something that we're spending a lot of time and energy on. We're not. We have very, very narrow things. We did one guidance for the banks, and then we did one time stress analysis, climate stress analysis, and that's it. And we dropped that at the network financial system. So we didn't do much on climate, but I do think, and I've said this publicly several times, I think it's a real danger for us to try to take on a mandate like that, which is very narrow application to our work. And the risk is if you go for things that are really not in your mandate, then why are you independent? And I think that's a very fair question. I do think we've done a whole lot less on climate than some people seem to think we did. Anyway, that's it. We didn't do that. Yes guys, so पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. बीच में अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं देख रहा हूँ. So yes, Nitin bhai, hi. Nikunj bhai, hi. Zahid Shirazi, hi. Yes. Paresh Undalia, okay. Nikunj bhai is saying yes. Nikunj Savalia, hello sir. Traveling आपका नाम क्या है पता नहीं मुझे. So hello sir बोल रहे हैं. So yes, आपके जो भी सवाल है तो आप you can ask. मैं चैट बॉक्स बीच में रेफर करते रहूंगा. That's not at all what we meant. तो आप अगर आपको कोई सवाल है तो आप बीच में पोस्ट करते रहते हैं, चैट बॉक्स में पोस्ट करते रहिएगा, तो मैं ट्राई करूंगा आंसर करने. It's just not a correct reading of like I can see how maybe people found that confusing and we have to take that into consideration. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions today. I'm Jolie Kim with CBS News. You've said wait and see, and the economy is doing fine today, but the impacts of tariffs are already showing up at the ports. Businesses big and small are telling us that they feel it, and most importantly, consumers say they feel it, that the challenges are here, and there's no waiting and seeing. For Main Street, what is the breaking point? What would have to happen to prompt a rate cut specifically? Well, so we really don't see in the data yet big economic effects. We see sentiment, there are concerns that higher prices may be coming or things like that. So they're worried now about inflation. They're worried about a shock from the tariffs, but they really haven't. That shock hasn't hit yet. Okay, so we're going to be looking at the not just the sentiment data, but also the real economic data as we assess what it is we should do. And remember, there will be two effects. One of them would be weakening economic activity, which translates into higher unemployment, and the other would be potentially higher inflation. Again, to say it again, the timing, the scope, the scale, and the persistence of those effects are very, very uncertain. So it's not at all clear what the appropriate response for monetary policy is at this time. And and by the way, our policy is in a good place, so we think we can wait and move when it is clear what the right thing to do is. Really not at all clear what it is we should do. So देखो पॉलिसी चल रही है, मोटा मोटे में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे सवाल आ चुके हैं, तो आई थिंक अभी आगे भी थोड़ा सुनते रहेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पर एट दिस स्टेज दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछने वाले थे, देखो एक लेवल के बाद क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीटेटिव हो जाते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो उसका कोई खास सेंस नहीं बनता है. तो जो सवाल आने वाले थे और अब तक जो सवाल आए हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन है लेकिन वो स्टैग्नेंट हो चुका है एक लेवल पे, यानी कि इन्फ्लेशन नीचे तो आ रहा है लेकिन एक लेवल पे आके रुक गया, यहाँ से नीचे आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, तो स्टैग्नेंट हो चुका है, यहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा है, लेकिन स्टैग्नेंट हो चुका है, तो जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. तो यहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रहा है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा है. और स्टैगफ्लेशन मतलब कि एक इन्फ्लेशन रेट एक जगह पे आके रुक जाना. अब फेड चाहता है कि यहाँ से इन्फ्लेशन नीचे जाए क्योंकि वो उसका जो 2% का टारगेट है उससे ऊपर है.
तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है, तब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। तो अब तक के जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी समरी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हॉकिश पॉलिसी लग रही है मुझे, क्योंकि वो स्टैगफ्लेशन की तरफ पॉइंट कर रही है। इन्फ्लेशन कट जो हो सकते थे या जो एक्सपेक्टेड है उसको थोड़ा डिनाई या थोड़ा डिले करने के मूड में है, या थोड़ा एटलीस्ट बातों से तो एटलीस्ट थोड़ा डील करने के मूड में है। और बार बार जो ये टैरिफ की बात हो रही है कि टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, उसमें दो चीजों की बात हो रही है। एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, और दूसरी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है इन्फ्लेशन की। तो अगर इन्फ्लेशन की अनसर्टेनिटी बढ़ती है और अनसर्टेनिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इट्स ऑब्वियस कि इंटरेस्ट रेट कट जितने फ्रीक्वेंटली या जितने फास्ट एक्सपेक्टेड है वो उतने फास्ट नहीं होंगे। तो जो कि एक हॉकिश डिलीवरी है मेरे हिसाब से। और हॉकिश डिलीवरी पे हम डॉलर को बाय करते हैं और दूसरी करेंसीज को सेल करते हैं। ये रहता है उसका कंक्लूजन। अब आगे और भी थोड़ा सुनेंगे 2-5 मिनट, उसके बाद फाइनल डिसीजन It's लेंगे। gone up, job creation is fine, wages are in good shape. You know, people are not layoffs or people are not getting laid off at high levels. अच्छा, दूसरा एक पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पॉवेल इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एट दिस लेवल। जो लेवल है अभी वो कंफर्टेबल है सब कुछ, मतलब ही इज इन द कंफर्ट जोन। यानी कि अभी जॉब भी सी है ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे है। तो उनको कट करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। नॉर्मली जब प्रेशर होता है मार्केट में तब कोई कट की तरफ भागता है। अब उसको यहाँ पर कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, तो क्यों कट करने की तरफ भागेंगे जहाँ पर जो जाने वाले थे। और इस वजह से मुझे लगता है कि वो उस डायरेक्शन में इतना ज़्यादा तेज़ी से या इतना कंपल्सिवली नहीं जाएँगे नीचे की तरफ। तो और वो एक हॉकिशनेस दिखा रहा है मुझे पॉलिसी में। And, you know, initial claims for unemployment are not increasing, you know, in any kind of impressive way, so. He is kind of asking कि मैं क्यों जल्दबाजी करूँ, मैं क्यों नहीं अभी इंटरेस्ट रेट कट करूँ। Itself is still, you know, in solid shape. Just a quick follow-up. President Trump now says he does not plan to remove you as chair. When you heard that, what did you think? I don't have anything more for you on that. I've pretty much covered that issue. Thank you. Hi, thank you. Chris Rugaber, Associated Press. Well, I just wanted to follow up. Earlier, it sounded like you said it was unclear how the Fed, you know, what kind of interest rate decisions you will make later this year. So does that, you know, in March, there was guidance that 2 cuts might happen, you know, 2 cuts are penciled in for this year. Is that now, that guidance from the last press conference, has that been overtaken by events? This one? You know, we don't do a summary economic projections at every meeting, as you know. We do it every other meeting, and so this was the meeting when we didn't do it. You know, we don't also kind of poll people, so I really wouldn't want to try to make a specific projection for where we are relative to that. We will, in 6 weeks, we have the June meeting, and you'll have another SEP. I'm not going to hazard a guess here today as to what it would be. Again, what I would say is that we think our policy rate is in a good place. We think it leaves us well positioned to respond in a timely way to potential developments. That's where we are. And that, depending on the way things play out, that could include rate hikes, rate cuts. You know, it could include us holding where we are. We just are going to need to see, you know, how things play out before we make those decisions. Great, and just to follow up on that, I mean, when you address the issue of how the Fed would handle both rising unemployment and rising inflation, how are you thinking about the fact that addressing one could exacerbate the other? So a rate cut to reduce unemployment could worsen inflation and vice versa. How do you handle those challenges? You just captured this is the issue with the 2 goals being attention. It's a very challenging question. Now, there can be a case in which one goal is very far. One variable is very, very far from its goal, much farther than the other. And if so, you concentrate on that one. And frankly, that was the case. Well, it wasn't a case where there were really tension. But if you go back to 2022, it was very clear that we needed to focus on inflation. The labor market was also super tight, so it wasn't really a trade-off. You know, I think you know what our framework document says. It says we'll look at how far each variable is from its goal, and also we'll factor in the time it would take to get there. So, you know, that's going to be potentially a very
difficult judgment. But the data could break in a way that it's not. I just don't think we know that. The data could easily favor one or the other. And right now, there's no need to make a choice and no real basis for doing so. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, Congress is currently debating spending cuts alongside extending the tax cuts. And I know you've talked many times about how the path of the debt is unsustainable, but given that we're also talking right now about the economy slowing, potentially even recession, I was just wondering, is there a danger that spending cuts now could slow growth a lot more? We don't give Congress fiscal advice. We take what they do as a given and we put it in our models and in our assessment of the economy. So I wouldn't want to speculate on that. I mean, I think we do know that the debt is on an unsustainable level, on an unsustainable path, not at an unsustainable level, but an unsustainable path. And it's on Congress to figure out how to get us back on a sustainable path. And it's not up to us to give advice. Would you think that they should take macroeconomic conditions into account as they look at this? I think they don't need my advice and our advice on how to do fiscal policy any more than we need their advice on monetary policy. Thanks, Mr. Chairman. Andrew Ackerman with the Washington Post. In your Jackson Hole comments last year, you said you would not welcome further cooling in labor market conditions. The unemployment rate then was 4.2%, which is what it is now. Many forecasters now predict a higher jobless rate. How has your tolerance for weakening labor market conditions changed compared to a year ago? So it was quite a different situation. What was happening last year is that over the space of 6, 8, 7 months, the unemployment rate went up by almost a full percentage point. And it was click, 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 click each month. And everywhere people were talking about downside risk to the labor market. At the same time, payroll job numbers were getting softer and softer. So there was a really obvious concern about downside risk to the labor market. And so at Jackson Hole and then in September, we wanted to address that forthrightly. We wanted to show that we were there we've been there for inflation for a couple of years. And we wanted to show also that we're there for the labor market. And it was important that we send that signal. Fortunately, since then, the labor market has really, and the unemployment rate have really been moving sideways at a level that is, well in the range of mainstream estimates of maximum employment. So that concern has gotten a lot less. So, you're at 4.2% unemployment. I think we were in a very different situation. Now we have a situation where, the risks to higher inflation and higher unemployment have both gone up, as we noted in our statement. And we've got to monitor both of those. We actually have a potential situation where there may be a trade-off or tension between the two. Potentially. We don't have it yet, and we may not have it, but that's what we have, and that's why I think it's a very different situation. I guess I want to follow up by asking how much of a rise in the jobless rate you could tolerate. I can't give you I'm not going to try to give you a specific number. I'll just say we have to now be looking at both variables and which of them is demanding. If one of them is demanding our focus more than the other, that would tell us what to do with policy. If they're more or less, equally distant and equally or not distant, then we don't have to make that assessment. The assessment is you wait. So I'm not going to try to be really specific about what we need to see in terms of the number. But if we did see significant. Okay, so एक काम करते हैं अभी पॉलिसी को यहाँ पर समराइज करते हैं. तो जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, लास्ट जो सवाल आया था वो भी एक अच्छा सवाल था कि एम्प्लॉयमेंट नंबर आपका गोल ये है, वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देखने का भी आपका गोल है. तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो आप देखना चाहते हो उस पे आप कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हो कि वो नीचे जाए तो चलेगा. और लास्ट ईयर आपने बोला था इसी लेवल के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आपने बोला था कि उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. तो अब आपके ऐसा नहीं लगता. सो इज लुकिंग मोर कंफर्टेबल एट दिस लेवल. को लगता है कि नहीं, अभी जो लेवल है वो ठीक है, उसका कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी को अगर मैं समराइज करूं तो समराइज इस तरह से करूंगा कि यहाँ पर जो भी चल रहा है सारा लेवल इन्फ्लेशन या एम्प्लॉयमेंट नंबर्स का, उस पे वो कंफर्टेबल है. फेड इज कंफर्टेबल एट दिस लेवल. और अगर कंफर्टेबल है तो उनको इंटरेस्ट रेट कट करने का
कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि वो इस लेवल पे इंटरेस्ट रेट कट क्यों करे। जल्दबाजी नहीं, मतलब रीजन तो है आगे जाते हुए करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट का जिस भी पॉलिसी में है वो थोड़ा तो डिले होगा, और उस वजह से अगर इंटरेस्ट रेट कट डिले होते हैं तो वो हॉकिश ही कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज अ हॉकिश पॉलिसी मेरे हिसाब से। इन समरी दिस इज अ हॉकिश पॉलिसी। हॉकिश पॉलिसी का मतलब है कि यूएस के लिए पॉजिटिव, यूएस की करेंसी के लिए पॉजिटिव, डॉलर के लिए पॉजिटिव, यूरो यूएसडी के लिए नेगेटिव, जीबीपी यूएसडी के लिए नेगेटिव, यूएसडी जेपीवाई के लिए पॉजिटिव। क्योंकि यूरो यूएसडी नीचे जाएगा तो डॉलर को फायदा होगा, जीबीपी यूएसडी नीचे जाएगा तो डॉलर को फायदा होगा, और यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा तो डॉलर को फायदा होगा, राइट। सो यूएस डॉलर के लिए ये पॉलिसी जो है वो पॉजिटिव है। अब इसका इफेक्ट आप बॉन्ड यील्ड पे भी देखोगे तो भी शायद आपको थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स तो अभी सेम लेवल पे है जहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया है। सीएमई फेड वॉच टूल जो पॉलिसी का आने वाली पॉलिसीज के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट का डिफाइन करता है, दिखाता है, उसको देखेंगे तो उसमें भी आई थिंक यस थोड़ी हॉकिशनेस की तरफ थोड़ा एक हल्का सा शिफ्ट आया है, लेकिन फिर भी कुछ खास इतना बड़ा मूव नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी जो है वो हॉकिश पॉलिसी है। इसको मैं समराइज करूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मुझे हॉकिश पॉलिसी नजर में आती है, राइट। सो यस ट्रेड जो बनेगा वो यूरो यूएसडी शॉर्ट, जीबीपी यूएसडी शॉर्ट, यूएसडी जेपीवाई लॉन्ग बनेगा हमारे एनालिसिस का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे एनालिसिस का क्या होता है? सेंटीमेंटल एनालिसिस। सेंटीमेंटल एनालिसिस यानी कि रिटेल सेंटीमेंट चेक करते हैं हम। अब रिटेल सेंटीमेंट चेक करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं नजर डाल लेते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स जो करते हैं 60% ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स जिस डायरेक्शन में होते हैं उससे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। तो यूरो यूएसडी में ट्रेडर क्या कर रहे हैं? 65% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। हमको क्या करना है? हमको भी शॉर्ट करना है। फंडामेंटल न्यूज हमको बोल रहा है कि हमको शॉर्ट करना है यूरो यूएसडी को। अब सेंटीमेंटल एनालिसिस देखते हैं तो वो बोलता है कि आप यूरो यूएसडी को बाय कीजिए, लॉन्ग कीजिए। तो फंडामेंटल और सेंटीमेंटल एनालिसिस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं बनेगा। जीबीपी यूएसडी में 40% लोग बाय कर रहे हैं, 60% लोग सेल कर रहे हैं। 60% लोग सेल कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? बाय करना है। न्यूज बोल रही है, फंडामेंटल बोल रहा है कि हमको क्या करना है? हमको शॉर्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनेगा। यूएसडी जेपीवाई में जाएंगे, 58% लोग बाय कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी बाय कर रहे हैं तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। 60-40 का वेट करना प्रेफर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। और न्यूज या फंडामेंटल बोलता है कि हमको बाय करना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है। तो एट दिस स्टेज मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं बन रहा है मार्केट में इन 3 करेंसी पेयर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। अगर दूसरे करेंसी पेयर्स को भी एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट है। यूएसडी कैड यहाँ पर भी लोग डॉलर को बाय करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनेगा। एनजेड यूएसडी 52-48 न्यूट्रल जोन है, तो यहाँ पर भी ट्रेड बनना मुश्किल है। एयूडी यूएसडी 46-54 ये भी क्लोज टू न्यूट्रल है, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनता। यूएसडी सीएचएफ 85-15 यहाँ पर भी लोग यूएसडी को बाय करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से इन टोटल, इन समरी, यहाँ पर एट दिस स्टेज ट्रेड नहीं बनता है। फंडामेंटल न्यूज डायरेक्शन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि ट्रेड अगर बनता है तो नीचे की तरफ, डॉलर में ऊपर की तरफ, बाकी करेंसीज में नीचे की तरफ बनना चाहिए। लेकिन सेंटिमेंटल एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट अभी ऐसे कंडीशन में नहीं है जहां पर आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। सो आपका बेटर टाइमिंग, बेटर एंट्री पॉइंट शायद आपको आगे जाते हुए मिले। ये पॉलिसी का जो इफेक्ट है वो 8 से 10 दिन या 7 से 10 दिन तक चलता है। हफ्ते से 10 दिन तक प्राइसेस के अंदर रहता है। सो यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉरवर्ड। आने वाले दिनों में आपको अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सकती है, लेकिन ये लेवल, ये जो सिचुएशन है अभी की सिचुएशन, यहाँ पर ये ट्रेड लेना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट आपको प्रॉपर टाइमिंग के बारे में मना कर रहा है। दिस इज नॉट द राइट टाइम प्रोबेबली टू टेक ट्रेड। इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रेड, वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बेटर एंट्री के लिए वेट करेंगे। तो इस वजह से हम, हमारा जो एनालिसिस का थर्ड स्टेप होता है टेक्निकल, उस पे हम जा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत सिंपल सा फंडा है। ट्रेडिंग करने से पहले खुद को 2 सवाल पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रेड करने का सही मौका है? जिसका जवाब मिलता है 2 चीजों से, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल। जब ये दोनों चीजें मैच होती हैं तभी सही ट्रेड बनता है, अदरवाइज ट्रेड जो है वो सही नहीं बनता है, या फिर एक्सट्रीमली रिस्की
या अग्रेसिव ट्रेड हो जाता है। सो अगर एक्सट्रीमली रिस्की अग्रेसिव ट्रेड कोई लेना चाहता है तो ऑफकोर्स उसको डायरेक्शन कोई चूज करना पड़ेगा, एंड डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर डॉलर। बट मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप जो हमको मना कर रहा है ट्रेड करने के लिए, इस वजह से ट्रेड नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन में, और आपको बेटर एंट्री या बेटर टाइमिंग के लिए वेट करना चाहिए, राइट। सो पॉलिसी का एनालिसिस बहुत क्लियर है, हॉकिश है, और सेंटिमेंटल एनालिसिस भी बहुत क्लियर है कि अभी ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एनालिसिस। सो आई थिंक यस, आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए। नितेश हलपति जी, सर ट्रेड कैसे करें इस डेटा पे? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जाहिद शिराजी जी, do you provide offline training in forex and what is covered in the course and duration of the course? जाहिद जी, I think you can contact my team, वो आपको गाइड कर देंगे इसके बारे में, और you can drop your number here, so my team will get in touch with you। आप अपना नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, तो आपको वो they will provide you the information, वो आपको information provide कर देंगे उसके बारे में। धर्मेश भाई, yes hi। निकुंज सावलिया, सिल्वर का एनालिसिस और गोल्ड का एनालिसिस भी बताइए सर। दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट निकुंज भाई। सो सिल्वर या गोल्ड का जो एनालिसिस है, दैट इज अप टू यू, आप वो कर सकते हैं। मैं सिल्वर गोल्ड को ट्रेड नहीं करता हूँ, आई ट्रेड ओनली करेंसीज, आई ट्रेड ओनली फॉरेक्स मार्केट, एंड आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर विद द फॉरेक्स मार्केट टुडे। अभी का जो एनालिसिस है मेरे ख्याल से वो काफी हद तक क्लियर है। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो ट्रेड बनता है डॉलर लॉन्ग का, ओके। और आई थिंक उसके लिए यस, वाह धर्मेश भाई, यस जलाराम भाई, के सर क्लियर ऑल, ओके यस धर्मेश भाई, सर वेट ही करना पड़ेगा। यस धर्मेश भाई, आई थिंक वेट करना ही सही रहेगा इस सिचुएशन में, बिकॉज मार्केट इस तरह के पोजीशन नहीं है। देखो, रिटेल ट्रेडर का आपको पैसा नहीं देगा तो आप पैसा बनाओगे कहाँ से? और अगर उसको पैसा देना है तो उसका माइंडसेट तो बनने दो। अभी उसका माइंडसेट सही नहीं है पैसा देने के लिए, राइट। और हम क्या बोलते हैं, 10 में से 9 बार रिटेल ट्रेडर गलत होता है, कभी एक आध बार सही भी हो जाता है। तो कभी वो सही हो जाता है तो उस सिचुएशन में फिर हमको उससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो बहुत सिंपली वी विल वेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट कंडीशन। अभी मार्केट कंडीशन आई थिंक मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है ये ट्रेड करने के लिए। अगर मेरा एनालिसिस का जजमेंट गलत होता है, यानी कि हॉकिश के बदले डॉविश पॉलिसी है, तो फिर पूरा सिनेरियो रिवर्स हो सकता है। बट मेरा एनालिसिस एज ऑफ नाउ, आई एम कन्विंस्ड कि एनालिसिस तो यही कहता है कि पॉलिसी इज हॉकिश। ऑलराइट, yes, if you have any other question we can wait for 2 more minutes। 1-2 मिनट ज्यादा वेट करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन हियर इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, ये वेलकम जाहिद जी। यस राजू भाई, सी यू इन क्लास। इस वीक हमारा लाइव मार्केट क्लास नहीं हो पाया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। सो आई होप कि आपने नॉन फार्म पेरोल का ट्रेड अच्छे से लिया होगा एंड यू वुड हैव गॉट योर रिजल्ट्स। उसमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में, सो इट्स टाइम टू कंक्लूड। धर्मेश भाई, सर अगर 2-3 दिन में एंट्री मिले तो हम ट्रेड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, अगर 2-3 दिन में एंट्री मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आज वेडनेसडे है, ये ट्रेड आपका 10 दिन तक वैलिड है, डायरेक्शन 10 दिन तक वैलिड है। एटलीस्ट 5-6 दिन तक तो एंट्री मिले तो आई थिंक ट्रेड कर सकते हो, अगर पीछे कोई इससे बड़ा डेटा या इतना इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज ना होने वाला हो, या बहुत ज़्यादा पावरफुल डेटा रिलीज ना होने वाला हो। वैसे पॉलिसी इज द सुप्रीम, पॉलिसी से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, तो अगर पॉलिसी के बेस पर ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक द ट्रेड। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वीक में आई थिंक सीपीआई का, यूएस सीपीआई का डेटा रिलीज होगा। आई थिंक सो, मुझे डेट अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ ऑन 14। मैंने बीच में कैलेंडर देखा था, सो आई थिंक इट्स ऑन 14। यूएस सीपीआई इज ऑन 14, यूएस पीपीआई इज ऑन 16। तो 14 से पहले कभी आपको ट्रेड मिले तो लेना चाहिए। 14 के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन 6 दिन आई थिंक ऑलरेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर
ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है होगा, राइट। सो 6 दिन के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो फिर वो वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट थोड़ा फिजल आउट हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है इफेक्ट। लेकिन फिर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं ले सकते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड। फिर टारगेट रेंज थोड़ा छोटा कर देना पड़ेगा, और उस समय के मार्केट कंडीशन पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। यस, लेकिन 2-3 दिन में एंट्री मिले तो डेफिनेटली ले सकते हो। All right, so I think it's time to conclude our live YouTube live. I hope you guys would have enjoyed today's policy analysis. आपको मजा आया होगा, and you would have learned a lot of things. And yes, ऐसे ही जुड़ते रहिए हमसे, and we'll try to do analysis, policy analysis. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इफ यू लाइक आवर एनालिसिस, तो दे आल्सो कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द एनालिसिस, एंड हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहेगा। जब आप कनेक्ट होते हो, अप्रिशिएट करते हो या मैसेजेस इवन भेजते हो तो अच्छा फील होता है। यस, इट कीप्स अस मोटिवेटिंग टू डू द वर्क दैट वी आर डूइंग। यस, so thank you once again for joining, and I hope you guys would have enjoyed today's session. We'll see you in another session tomorrow evening. कल शाम को फिर से जुड़ेंगे एक बार यूके के पॉलिसी एनालिसिस में। तब तक के लिए enjoy, good night.